Hi, good evening, friends. Watching us live today. We gonna have with us. Oh, he's right here, the CEO and founder of Medicart Healthcare Systems, Mr. Manoj Kukreja. Hi, Manoj. How are you doing? Great, great, boss. Doing great. Well, welcome to this Insta Live session, and it's a really pleasure to have you here. Thanks a lot. Thanks for your time, boss. So we're just waiting for Saurabh to join in. Yeah. So how is the workflow these days, Manoj, for you being part of the industry? Workload is very high actually, relatively if I compare with even last year. Very high. I mean, a lot of anxious movements are there. Sometimes, it's Uh-huh. very difficult to judge whom to cater, whom to not. So relatively workload is high, but we are able to manage it as we are in always in a tune of, we work 24/7 in earlier times also. Pre-corona era also we used to, work for 24/7. So in that case, we Right. never faced such issues. However, some stretch is there because lockdown restrictions are there. People are coming from here and there, and they are facing family issues. So that may be creating a lot of pressure. Otherwise, not much of a difference in our work style. So in fact, I was told by Saurabh that you guys have been working. Hi, Saurabh. Hi, Saurabh. Hello, Welcome how to are you the. doing? Thank you. Thank you so much. So we have a very apt, two guests who are well on time, very punctual. Thank you so much for being punctual, Saurabh. So I was I just think this is asking, yes. I was asking This is our Manoj. first this thing on Insta Live. We have never used it I as a mean, for live. with me also, we always been digitally connected with Zoom or Skypes of the world or WhatsApp chat and all those things. But I never used Insta, frankly speaking. I mean, I came to know from Saurav that this is doing well and it's a good way of connecting people. So, I mean, this is also for the first time. This is my first experience with Insta Live actually. Precisely, ये हम लोगों की जनरेशन के लिए नया मीडियम है. We have been using a lot of other mediums. Yeah, my son told me actually many things because I was trying to connect through a laptop. So he told me that better you connect with a phone because that is the basically for mobile app friendly app. So he taught me yesterday. So that helped me. नहीं, Insta Live मोबाइल ऐप के अलावा चलता भी नहीं है. There is no desktop version for So live. I was not aware because I was trying on a laptop. So he told me that I was not aware of that actually. Kids are these days very smart. So without wasting much time, we have our audience also who are really willing to listen this conversation. So let's start from you, Manoj. I really wanted to understand, a little about your journey. What has been your journey so far? So Yeah, please. first of all, thanks, Vaibhav. I mean, given us an opportunity to interact and sharing our experience and thoughts on healthcare sector. So, first of all, many thanks to Who's Global and Vaibhav and the team who's, who support to this session. So, as far as journey, you asking, it's a very broad word for me because I mean, telling you in crisp is very challenging for me, but I will try to put it in few bullet points. So, if I talk about healthcare sector and Medicart as such, it is basically I can divide my journey in two major parts. One is the team building, the other one is my customer acquisition. So, without entering into much of an intricacies, team building has been the most challenging part of my career in healthcare. And Mhm. trust me, I will start with a caveat that whosoever is working with us in our company, they all are non-healthcare actually. So nobody is coming from the industry. Except I had an experience of a pharmacology for 1 year or 2 year in pharmaceutical companies. That too, in a very long time back. I mean, in 93, 94, I worked for Cipla. So it was a pharmaceutical company. That time was a leading company, and this time also is a leading company. So that experience I had, and other than few things which I can tell you that I have been a London patient.
and being a learned caregiver in my family. So that probably instigated us to enter into healthcare sector. So team building has been very, very challenging. And believe me, I always try to build the team through my friends and my co-minded people. That was my first priority. Instead of gauging their knowledge and the knowledge of the industry, so that was my first priority. Even Saurav is a part of that byproduct of that theory only. Because if you recall that I started Medicart Healthcare with the support of my elder brother. He is a subtle supporter and consulting advisory. He's been giving us since start to me. And frankly speaking, he pushed me to a scenario where I could capture some money also. I mean, I could get some 150K seed capital through their investors. So that was one part of the team, this thing which given me a lot of boost to the company. And we started with a 1+1 type of a setup. And then the story goes on. Friends went out. Friends came in, friends went out. And after completing 2.5 years, Saurav joined us. And he's also known to me for the last 20 years. So he worked with me as a my team member, my subordinate. He worked as, I mean, he's 7 years younger to me. So I thought he's a and he tried to understand the healthcare market with me, and that was a very time opportunity which I captured, and probably one of the golden point I grabbed it in 2015. Saurav joined us. So that is first 2 years it took to me to develop the team, and then later on we worked on the second part of it, which was customer acquisition. So customer acquisition divided in two parts. One is commercial, and one is non-commercial. So our focus is customer acquisition, not as only commercial. So it has to be non-commercial also. So it's not only gaining revenues and growing by 100% in few years and growing by CAGR 45%. It was about acquiring the customers. So if I give you a very basic example, we count a customer of even buying things at 10 rupees from us, we count a customer. So that customer given us, a lot of support, a lot of moral support, a lot of referrals, and made our company to this level. So 8 years of a journey, if I count 2 to 3 years time team building, and then with the inclusion of a team member like Saurav, we ballooned into team member down the line. Then trainings, we spend 40% of the time in trainings with the people, soft skill. Believe me, the down the line people we have all are, somebody is a son of God, somebody is son of a plumber, somebody is a son of driver. So we captured them and unskilled people and pushed them to healthcare sector. That is the only reason we could derive into affordable healthcare solutions. We broadly work into healthcare of respiratory issues. This is one vertical. If we call it, this Medicare Healthcare is a home care company. It's a home care company, patient home care company, and patient home care business is 80% is respiratory. This gives you prolonged diseases, and it can be catered at home instead of going to the hospital. Prolonged diseases can be catered at home, and that is why this is called home care business, 80% weighted. So we worked very hard with the help of the team, very hard into respiratory sector. I think this is what I can precisely tell you as a journey. Otherwise, if you give me 1 hour, 2 hours, keep going. No, I am really impressed. I mean, the way you explain, people who are watching us, they may not be from the healthcare sector, but you said it in a very simple language. So, I mean, just out of curiosity, you graduated in 1993, right? Yeah, and Medicart was started 2013. So, what took you so long to, bring this to reality? This is your own venture. So I tell you, actually there are till 2006 I worked with a lot of organizations. So I started my career in 1993 with Cipla and worked there for 1.5 years. And I shifted to because of unknown reasons, because I was young, impulsive, and I left Cipla and joined Apollo Tyres. Apollo Tyres is an automobile derivative company. So I worked there for 11 years and I had a very stable life there and worked across all the areas. And post working there in 11 years, I worked for a financial services company, Cholamandalam. And Saurav worked with me in Apollo as well and Cholamandalam also. So this was a financial services company. So I worked in worked for various companies till 2006. And in 2006, I ventured out.
And the trigger point was, which I would like to share with you, the trigger point was in 2005, I had an early detection of heart disease. And I got an angioplasty, and people were, caring for me, including my office colleagues. But one thing which was coming in my mind, that my seniors were, just keeping me into a cool loop. Cool loop, I mean to say that पता नहीं ये मनोज कर पाएंगे, इस pressure को ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, because I was into business development. So that time, that triggering point, actually I thought that I should leave and I should venture out. That was 2006. So I ventured out and developed a financial services company, advisory company, basic financial products I learned, and started advising people. I ran that proprietorship company for 2.5 years. That was for my bread and butter. But that gave me a lot of contacts, a lot of interactions with a lot of people. And in 2008, I came across with a lot of Americans, a lot of USA citizens, through which I could develop a joint venture with a US-based company called Garrettcom. And I was a 51% stakeholder there. In 2008, we developed Garrettcom India Private Limited. And it was a small company. In their size, it was a $50 million company, but in India, I could develop a business of $2 million, which was huge in India. And as luck would have it, I was working for an infrastructural segment, which was power sector, and it was industrial automation. And being a non-engineer, I could develop a sales business of $2 million. And that time also, I was 1 + 2 only. And that the chairman of that company, when the company was sold in 2012 to a bigger group called Belden, then I had to dilute that Indian version, because they already had an Indian version called Belden India Limited. So I had to sacrifice that. And in that case, I had to now, I was in a situation where what should I do? So healthcare came in my mind, because being a learned patient, while working into a healthcare sector, a lot of doctors surrounded in my family. And I thought that through e-commerce, I should develop a company called Medigart Healthcare. So that was a story of 2006 to 2013. It was a lot of ups and downs. I can explain you in few words this much only. If you give me more. I must say only one word: incredible. So, I mean, since you mentioned about, all your colleagues are from different sector and they're not healthcare. Saurabh, of course, I know, we've been classmates in school. Yep. He went to do IHM in Jaipur, correct, Saurabh, if I'm not wrong? Right. And from hospitality, you moved to a complete different industry. What does that? How does that happen? First, thank you so much, Saurabh, Vaibhav, right? So thanks a lot. And Manojji, I think, Vaibhav, I think we should be conducting more sessions like this, because I think today Manoj sir is very much vocal. इतनी तारीफ तो उन्होंने मेरे से लास्ट 5 years में जितनी नहीं करी जितनी मैंने आज कर दिया. So like maybe he got a platform also. So thank you so much, sir. And वैभव, हम लोग स्कूल में थे, साथ में हम लोगों ने पढ़ाई करी. तो होटल मैनेजमेंट इज लाइक I think I'm made up for the service industry itself, right? तो होटल जब IHM जयपुर में मैंने ज्वाइन किया, तो my placement was in Radisson Hotel, right? And I worked there for 1.5 years. अच्छा सा एक नया बार खुला था जिसमें ओजोन जो है, and everything was there, right? But then I wanted to study more. मुझे थोड़ा और पढ़ाई करना था, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया. And what I thought that this experience is going to help me in my future placements also. But what was happening, जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही थी, they were asking कि आप तो you are from a very sophisticated industry, आपने रेडिसन होटल में काम किया है, आपने सर्विस बिजनेस में काम किया है, तो how you survive in FMCG, आप डाबर में कैसे काम कर पाओगे, आप अपोलो टायर्स में कैसे काम कर. So then I thought I should go for some industry which is because otherwise मेरे पर ये स्टैंप लग जाएगा कि आपने एक बड़ा sophisticated इंडस्ट्री में काम किया है, how you survive in that. And according to me, it's all about managing people. वो चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, कोई सी भी वर्किंग हो, आपके साथ जो काम करते हैं वो आपके कलीग्स हैं, देयर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स. जो आपके बॉस हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, और कस्टमर्स हैं वो भी ह्यूमन. इफ यू नो हाउ टू मैनेज देम, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द इंडस्ट्री. बट एनीवेज, बिकॉज ये समझाना लोगों को काफी डिफिकल्ट था उस टाइम पर. सो थ्रू कैंपस आई वाज प्लेस्ड इन अपोलो टायर्स एंड आई जॉइंड इट. And there I was dealing with the transporters, I was dealing with the drivers, truck drivers and dealers. But एक चीज जो बिलीव करता हूँ, मेरे फादर बोलते हैं कि जो भी होता है बेटा वो अच्छे के लिए होता है.
So what went good there? I met Mr. Manoj Kukreja, right? तो वहां मेरी इनसे मुलाकात हुई और हम लोग पुरावंडलम में या अपोलो टायर्स में। यस अच्छा, ओके। और वो मुलाकात भी ऐसी हुई, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको, कि हम लोग, ही वाज ब्रांच मैनेजर फॉर करनाल ब्रांच, आई वाज पोस्टेड इन कानपुर एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। तो वी बोथ वांटेड टू कम बैक टू दिल्ली, राइट? और वहां पे क्राइसिस हुआ दिल्ली के ब्रांच में, और हम लोगों को, मनोज जी को वहां से और मुझे कानपुर से आके पटका गया कि ये क्राइसिस वाली ब्रांच है और यहाँ पे आप हैंडल करो जो है। सो आई थिंक वो 3 months जब हम लोगों ने काम किया, और हमारा ब्रांच भी ट्रांसपोर्ट नगर में थी और सारे ट्रांसपोर्टर बाहर खड़े हुए हैं लड़ाई करने के लिए। सो वी मैनेज, वी वर्क विद ईच अदर, हम लोगों ने साथ साथ काम किया और हम लोगों ने जितनी प्रॉब्लम्स थी एक एक करके वो सारी क्लियर करी जो है। तो हमारी बॉन्डिंग उस दिन से बन गई, जो आज तक है। इन टचवुड conspiracy played an important role. Nature want, as a spiritual conspiracy played a very vital role. Absolutely. Yeah, so माना था तो एक को कानपुर से और एक को जो है दिल्ली से बिहार में बताया। Good. So how do you think? Sorry. हाँ, so we came to Delhi. We met here. So Manoj, how do you think the marketing landscape has changed over in last 8 years? I mean, कुछ dynamics change हुए हैं? Were there any initial challenges, or things were very smooth all these years? कैसा रहा? Lot of it's very dynamic field, frankly speaking. It's very dynamic field. Even in our case, if you ask me, in 2013, when I put in my proposal to my investor, which was ex-chairman of Garrettcom Inc., which I discussed, who supported me, given me around $150K USD. I sent me an Excel sheet and explained him this is what I'm going to do. So what he said, this is basic e-commerce. He said he could understand very fast. This is basic e-commerce. So I'll becoming a Medicart as a e-commerce company and marketing the products, healthcare monitoring, home care products there. So he could understand very fast and given me money on there. In maybe first meeting, he sent me $30,000 to establish basic things. In 6 months, of the pilot, I could realize that e-commerce cannot cater my patients. Only it can help in interaction. It can help in serving my patients better in efficiency, but cannot give me the business model as such. I cannot generate manpower, employment out of this business model. And entrepreneurship means you have to create employment. If you can't create employment, there is no point. Me, I was running my bread and butter easily for my family. Struggled a lot in my career from 2006 to 2013. So in 6 months, I decided that I should do something different. So that is what I am basically trying to explain. What is the dynamism happened in our career also. 6 months, I entered into patient home care. Patient home care means we have to serve patients at home, as simple as that. And within 6 months, we change the whole model. And if I have to cater patients at home, I need to have people. And then what should I do? When I started going and interacting with people, कि मुझे ये एक manpower hire करनी है, people were quoting me 40,000, 50,000. I can't afford it. I need 10 people. I can't afford 4 lakh rupees a month. So how should I do it? I interacted with the people, those who were serving my domestic help at my home. उनका बेटा, उनका ब्रदर, मैंने उनसे बात की. मैंने को बोला कुछ नहीं करना, आपको इस डिवाइस को मॉनिटर करना है. You will not trust me. My first employee was my driver, who was to set the devices, medical devices. That was first my employees. But obviously there was an efficacy issue, there was finesse issues and all those things. Then I learned that एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया कि नहीं, मैं मैन पावर से काम करवा सकता हूँ, इसको ट्रेन किया जा सकता है. Because when I saw a person who's coming at my home and taking a blood sample, I saw his profile. मैंने कहा इस प्रोफाइल को तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए कोई डिग्री या किसी डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है. वो हम लोगों ने किया, ये फोकस हमने किया. Even when Saurav joined, we had that focus. तो आप ये सोचिए कि every 6 months there was a dynamism. What I believe, precisely if I reply your question, this world now is going to be digital. But patients have to be taken care of with a passion, compassion. Nothing more than that. वो कभी change नहीं होगा, बाकी सब कुछ change हो जाएगा. वो कभी change नहीं होगा.
तो मैं आपको प्रिसाइजली यही इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ कि 8 साल में जो चेंज हुआ है वो डिजिटल चीजें चेंज हुई हैं, इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स चेंज हुए हैं, हर चीज चेंज हुई है, बट पेशेंट कंपैशन कभी चेंज नहीं हुआ है। वो आज भी हमारे को अपने साथ रखना पड़ता है, हमने उसको समझना पड़ता है कि पेशेंट क्या कह रहा है। और मैं आपको बताऊं, पेशेंट सिर्फ 20% सिनेरियो में बात करता है हमारे से, हमें 80% सिनेरियो में केयर गिवर से बात करना होता है। एंड केयर गिवर इज अ वेरी बैलेंस पर्सन बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि मुझे पैसे का भी देखना है, मुझे मुझे वो प्रोडक्ट भी लेना है जिसमें मुझे सर्विस भी मिल सके, जिसमें मेरे पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना आए, मुझे घर तक वो पहुंचा दे, मुझे रात को 12 बजे भी फोन करूं तो वो हेल्प कर दे। तो आई बिलीव वन इज कांस्टेंट, द वेरिएबल पार्ट इज ओनली डिजिटल एस्पेक्ट, एंड दिस इज चेंजिंग लाइक हेल। आई एम बिलीविंग, ट्रस्ट मी, बिलीव मी और नॉट, इतना पैसा इन्फ्यूज होता है इस चीज के अंदर, एंड वी स्पेंड very little there, but we spend a lot of energy into compassion management. Great, yeah, that's a great insight. So सौरभ, आपको भी मेरे ख्याल 5 साल से ऊपर हो चुके हैं मेडिकार्ड में, तो मतलब what challenges, how critical your role would be, कैसा रहा अभी तक का ये सफर? I am asking in front of your senior colleague, but you have to be very transparent, honest. अगर आप पूरा जर्नी पूछेंगे तो it's been amazing, it's been wonderful. In 5 सालों की it's been amazing, it's been wonderful, and there has not been a single moment जब मैंने उसको cherish नहीं किया हो, मैंने उसको enjoy नहीं किया हो, and it's all learning every time, right? And he'll be the right person who will tell you that what value addition has been done by me. But few things when I joined, so I realized that the team size is very small, so we have to work. I want you to understand more challenges, our audience. So no political correct statements. Yeah. कुछ ना कुछ challenges भी face किए होंगे. I'm sure you being part of sales and marketing. Right. Critical situation. Challenges, देखिए क्या होता है कि अगर आपका साथी अच्छा है ना, तो challenges फिर वो फील नहीं होते हैं. Challenges तो हैं, वो आज भी हैं. Challenges आज भी हैं और वो शायद आते रहेंगे. But if you know how to sort out the problem तो आती रहेंगी, बट आपको उसका जो मेथोडोलॉजी है वो अगर आप कर सकते हो कि आपको एफर्ट्स करने हैं, आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करने हैं और आपका डायरेक्शन ठीक है, एंड you have a mentor with you. So these are the things, if you have with you, I don't think कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी उसमें. कि हमारा टीम साइज थोड़ा सा कम है, तो वो मैंने एक्सटेंड किया. हम लोगों ने प्रोसेसेस, एसओपीज क्रिएट किए एक साथ मिलकर जो है, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम लोग इसके लिए एक यूनिक मॉडल क्रिएट करें सेल्स के लिए, right? We made a 3-step formula for our sales people also jointly, and then that's how we were like we transformed that to our team, because it was not like कि सौरभ को सब पता हो, सौरभ ने चीजें सीख ली मनोज जी से, अब वो सारी चीजें वो 15 लोग जो टीम मेंबर्स हैं उसके होने चाहिए. So we should be having 15 Saurabh, right? Because one Saurabh cannot be omnipresent everywhere, right? So what we tried, whatever we have, we should be giving it to our team, and then there comes the training and development. वो training वाला जो part था, that was the most challenging part, but वो हम लोगों ने start किया. We were having the monthly trainings also, right? I'm sorry, I think मंथली ट्रेनिंग्स करी, एसओपीज बनाए, तो ये सारी चीजें वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच. तो वो स्टार्टिंग में करने में टाइम लगता है, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, और जो मेथोडोलॉजी है कस्टमर को कैसे फॉलो करना है. वैभव, लेट मी टेल यू वन थिंग, हम लोगों ने रिलेशनशिप मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखा. जैसे मनोज जी ने भी आपको बताया कि यू हैव टू बी एम्पैथेटिक. See, you are dealing with the patients and their caretakers, so you have to be empathetic to them. ये approach empathy वाली होनी चाहिए. Anybody can call my colleague, my team members. अगर वो कॉल पे बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि आप ये can I know who is the patient? If the answer comes कि मेरी मदर है या फादर है, then the answer you will get it is, अच्छा अंकल की एज कितनी है, आंटी को क्या प्रॉब्लम है. So these are the small things which we try to incorporate. Personalized. You get to their shoes. See, they are having the issues. आप उनको help करो. आपको counseling करनी है. You forget about selling. आप काउंसलिंग करो, आप समझो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका, यू गिव ए सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स. डोंट सेल योर प्रोडक्ट देयर. आप अपना वो प्रोडक्ट मत दो, आप उनका सॉल्यूशन दो. इफ यू कैन प्रोवाइड दैट आई थिंक दिस इज द वन अप्रोच व्हिच हेल्प्ड अस अ लॉट. हम लोगों को ट्रेनिंग में और थोड़ा सा डाउनलोड करने में टाइम लगा, बट दिस इज हाउ वी डिड इट. एंड
बाकी तो I was going through one of your talks also. So you were talking कि टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, मनी इज इम्पोर्टेंट, बट टाइमिंग जिस टाइम पे आप उसको पिच इन कर रहे हो, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक लिसनर, राइट. तो वो टाइमिंग हम लोगों ने शायद कहा कि आप थोड़ा सुनना शुरू करो. मैं भी काफी कम सुनता था पहले, मेरे को बोलने की ज्यादा आदत है, बट देन आई रियलाइज्ड इट वोंट वर्क हियर. फर्स्ट लिसन व्हाट द कस्टमर इज सेइंग एंड देन यू गिव योर सॉल्यूशन. तो ये चैलेंजेस थे जो कुछ आए, बट मुझे इसलिए चैलेंजेस नहीं लगे बिकॉज वी ऑल वर वर्किंग टुगेदर. आई डोंट रिमेंबर इवन अ सिंगल डे जब मेरी मनोज जी से 5-6 बार बात ना हुई हो. Right, so this is the kind of communication we were having, even in spite of not being in the office also. So that's how we were doing it. So I think it's sales. I would add a few points, which precisely 4-5 words which I would like to add, because in 2015 when Saurabh joined, company was struggling for a team retention, and few friends went, few friends came in, type of a system going on, and a lot of load on me. So I have saved his phone number as Saurabh Saraswat Sarthi. Right. So I used his name as a Sarthi. Why? Because he is a multitasker. Right. And at current time also, after spending 5 years also in the setup, when we have grown from X level to 4X level, in terms of number of customers, we have gone up to 10X levels. I'm just talking volumes, it's 4X, but in terms of customer, we have gone 10 times. In that case also, Saurabh currently also it handles the calls on his own and works on all Sundays, believe me, all Sundays. So that is the contribution. These contributions behind the curtain, team is not even aware that out of 2 CR, the guy is already creating a business of 1 CR and just came in front of your table and catered 1,000 customers on his own. So this is the strength. This is the contribution he has made to the company, which is remarkable, irreplaceable, frankly. Saurabh, it's a big pat on your back. Yes, that's what I'm saying. We should over thousands of people from the boss directly. Yes. So yeah, great. I mean, but tell me one thing. Were you prepared about the present situation? I mean, as a company, did you presume that something gonna happen in India and the responsibility will come on you as a company? This is what the pandemic you are talking about. Yes. Yeah. So I'll tell you, frankly speaking, when it started in 2020, as an individual, if you ask me, I was scared, and I was the first person to close down the office, stop home visits, and we were in a vacuum kind of a situation. But when things started moving in 10-20 days, we thought we are in patient home care. We can't do like that. Believe me, we have not even shut down our office even a single day from the day one of our pandemic. Single day. Oh, really? Every person, I mean, maybe 1% or 2% coming to the warehouse, delivering the services or the products to the patients, or patients are coming to our place due to the lockdown restriction and all. We cannot go to their home, so they are coming there. And people in the last year, we got the antibody test done of all warehouse people, and out of 5, 4 were positive. So probably they must be asymptomatic. So if I come to a question, we were mentally initially not prepared, but what helped us was we always worked on Sundays and nights and taking calls at 12 o'clock or so. We were that was in our genes, so it did not hurt much. I mean, it took 10 days to us to come into the action. So we were not exactly mentally prepared, but our bodies were prepared, our mind was prepared for such situations. I tell you, when my son was 5 years old or 6 years old, I had an insecurity in my mind, because I told you that I had health issues and all those. So I had an insecurity in my mind. I asked him, agar aisa kuch hua ki my family minus me, then what will happen to my family? Obviously, better halves, have their own impulsive approach. But I asked my son, beta, agar aisa hua to tu kaise manage karega usko? कैसी सिचुएशंस होंगी उनको? हम उनको ये लेसन देने की कोशिश करते थे. ऐसा नहीं है कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं. वी आर ऑलवेज मेंटली प्रिपेयर्ड. बस हम लोग डार्क्स को देखना नहीं चाहते हैं, हम लोग उनको टच नहीं करना चाहते. यही होता है. अदरवाइज हम सारे मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं. दैट इज व्हाई वी गेट आवर इंश्योरेंस इज डन, हेल्थ इंश्योरेंस इज डन. वी ह्यूमन बीइंग्स आर इनसिक्योर. आई मीन इट्स अ ग्रिड ऑफ. आई एम मोर क्यूरियस टू नो हिज आंसर, Manoj. I am more curious to know your son. I am more curious to know your son's answer. What was his reaction?
उसने बोला कि मुझे क्या करना है। मैंने बोला आपको ना मेरे साथ एक इमरजेंसी में जाना पड़ेगा और आई विल मेक यू विजिट टू एन मॉर्चरी, यू हैव टू सी देयर। तो कहता व्हाट इज देयर, मैंने कहा देयर आर डेड बॉडीज, यू हैव टू सी वेदर कैन यू सी एंड मैनेज सच सिचुएशंस। तो coincidentally he had a very vanilla type of a reply at that time because he was in just fifth sixth standard. तो he said okay fine, मैं अपने स्कूल से विजिट में हॉस्पिटल्स में बहुत बार जाता हूँ एनजीओ में, तो लेट आई गो देयर। बट मैंने वो सिचुएशन उनको समझाई। ट्रस्ट मी, मेरे को काफी रिमार्क्स मिलते थे मेरे जब मैं पीटीएम्स में जाता था बच्चों के, तो उनके काफी रिमार्क्स मिलते थे, आप बच्चे को बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हो, दिस इज नॉट अ गुड साइन। मुझे ऐसे रिमार्क्स दिए जाते थे। बट मुझे ऐसा लगता था कि आई एम फेसिंग दिस problem, so probably I don't know, today my situation is different, frankly speaking. I'm not as insecure as I was 10 years or 15 years back, but and believe me, I'll give you a tagline. I never felt alone in either in my company, neither in my family. In all tough times, my family members, my teammates are with me. I always feel secure about it, that everybody is with me. I always use this chain of Akla Chalo Re. Does not mean Akla Chalo Re literally. I mean, Akla Chalo Re means you just set an example. Akla Chalo Re does not mean that you have to just walk alone. Akla Chalo Re means set an example, and then people will follow you. So I always believe these two ends of the grid, and that helped me a lot. Helped my family a lot, and not even a single day in last 8 years of my company I felt alone. Believe me, कितना ही stressful moment आ जाए, मैंने कभी भी उसको अकेला नहीं समझा था। मैं पता नहीं आपके क्वेश्चन का जवाब ढंग से दे पाया तो नहीं दे पाया हूँ, but that was the texture. Salute to the thought, the way you think and the way you defined Ekla Chalo Re. The entire meaning of the song has, a different perspective now. So Saurabh, I have a question. I mean, though your boss has mentioned 4x growth in terms of value, 10x growth in terms of, number of customers, but I'm sure while you're dealing with, critical equipments, things which are needed like oxygen concentrators, BiPAP machines, air purifier. So at any given point of time, did you feel, do you feel proud about the situation? You have all that with you when people are struggling for it. Was there any such situation in last, 1 year? See, कभी ऐसा हुआ? ऐसा हुआ कि ये जब चीजों की रिक्वायरमेंट आई तो और वो हमारे पास अवेलेबल थी, तो वी फेल्ट प्राउड दैट हमारा, देखो मैंने आपको शुरू में बताया कि वाई IHM से यहाँ पर आया, उसका रीजन ये था कि आई वांटेड टू सर्व पीपल, वो मेरे जीन्स में है, राइट। तो यहाँ पर लगा कि पीपल आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड वी हैव दैट, राइट। तो व्हाई डोंट वी हेल्प देम ऑल्सो। यू विल नॉट बिलीव, लास्ट 1.5 month का भी मैं आपको बताऊं, हमारी अभी भी 30 से 40 डिवाइसेस मार्केट में हैं, लगी हुई हैं, और वो हमारे रेफरेंसेस, जानने वाले रेफरेंसेस के रेफरेंसेस, ऐसे करके वो हम लोगों ने नई डिवाइसेस दे दी थी व्हेन देयर वाज क्रंच टाइम आल्सो। सो द ओनली, सारी हम लोगों ने एक बार के लिए नहीं सोचा कि यार ये ओपन कर रहे हैं, शायद इसका तो बेटर प्राइस भी मिल जाएगा एंड वी कैन सेल इट आल्सो। सो दैट थिंग दैट वी आर, हम लोग कुछ बन रहे हैं या फिर हमारे पास कुछ ऐसी चीज है भगवान ने शायद हमको प्रोवाइड करी है जो हम लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। So I feel proud for that, and if we can be a messenger, if we are acting as a catalyst, कि अगर ये process है help करने वाली, इसमें अगर हम as a catalyst का काम कर सकते हैं, because we are not the manufacturers, right? We are not the customers, but as a mediator अगर हम help कर पा रहे हैं, and if we are able to give it to the right people, see it's very easy। वैभव, हमारे पास कितने सारे प्रपोजल आए कि आपके पास 200 डिवाइसेस आ रही हैं, आप हमारे को 100 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, खत्म। वेरी इजी फॉर अस कि हम लोग 2 मिनट में आया और हमने दे दिया। वी हैव नेवर डन दैट। यू विल नॉट बिलीव, वो अगर 240 डिवाइसेस आई हैं तो वो 235 कस्टमर्स के पास गई हैं, बिकॉज वी वांटेड टू गिव इट टू द पीपल हु एक्चुअली नीड इट, रेदर देन जस्ट सिटिंग ऑन टू इट एंड हमारा अपना काम शॉर्टकट कर लेते हैं। So so that way हम लोग we felt proud कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चैनलाइज कर पाए हैं चीजों को, अपना शायद सोसाइटी की हेल्प करने में, और जो जरूरतमंद है, जिनको एक्चुअल नीड है, उनको देने में जो है, rather than जस्ट वो आया और दे दिया, 200 यूनिट्स किसी को दे दी, ये दे दी। So that was not the aim, and I think it helps us a lot। हमारी तो अगर भगवान भी अच्छा काम अगर हमारे हाथों से करवा रहा है, so we are lucky in that, and we feel proud of this कि हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम आती है, now people come back to us, they call us,
in my mobile, I have 15,000 plus customers number with their names. Right. So anybody who's calling me as a customer, I'll write his name and I'll write the CPAP, BiPAP, OC, whatever. Right. So they're just asking for the help. They're asking something. So it is our moral duty कि अगर रात को 12 बजे भी मैं जगा हूँ और मैसेज आ गया है तो if I can answer that, then I should do that. Right. So these kinds of small things has motivated us and allowed us कि हम लोग क्या better कर सकते हैं काम. इसके अलावा हम लोग हमको जब भी मौका मिलता है कि हम लोगों ने अपना थोड़ा CSR एक्टिविटीज कर लेते हैं, बच्चों के म्यूजिकल वो हैं वो स्पॉन्सर कर दिए या फिर कभी फूड ड्राइव कर दी. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक्चुअली बहुत चाहिए, आई थिंक इंडिया में तो बहुत चाहिए, दैट इज एजुकेटिंग पीपल. राइट. अवेयरनेस बहुत जरूरी है. अभी नाउ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द स्लीप एपनिया, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द ऑक्सीजन थेरेपी. तो वो उनको राइट वे में बताना, वी हैड मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर दिस. हम लोगों ने ना खुद पहले तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग. वो डिवाइस हमको समझना पड़ेगा क्या है. हम समझ जाएंगे, हम कन्विंस होंगे, देन वी विल बी सेलिंग इट टू द कस्टमर. I'll not call it selling. हम लोग उनको बताएंगे कि this is the solution of your problem, and then it is not possible कि हर टाइम हम अच्छे से explain कर पाएं. So what we have done, we have made the modules, we have made the interactive videos कि सर आपको ना मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, you just go through it. 4 मिनट का 5 मिनट का है और वो that is the summary of whatever experience we have, whatever the questions we have been asked. वो सारा करके दे दिया. उसके बोला सर आप 5 मिनट बाद दोबारा फोन करिएगा, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो बताइएगा. सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बट वो जब तक राइट लोगों के पास सही तरीके से नहीं जाएंगी तो they'll be always confused कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सो दैट फीलिंग, जैसे मनोज जी ने बोला कि हम लोगों ने 10 रुपए की चीज भी डिलीवर कराई है, बट सेकंड पार्ट नहीं बताया उसका कि वो 10 रुपए की चीज डिलीवर कराई है, बट वो 10 रुपए की चीज इतनी इंपैक्टफुल है कि 1 साल के बाद वो 2 लाख रुपए उस कस्टमर ने सेम डिवाइस परचेज करी, एंड देयर वाज नो कॉम्पिटिशन. ही हैज जस्ट कॉल्ड अस कि आप डिवाइस भिजवा दो. So this is the power of service. This is the power of following up with the customer, and this is the power of educating and and giving the right advice. So I think that way it has been a great thing that we are able to help people also. तो दो चीजें हैं सौरभ आपकी बात सुनने के बाद. I will bring in a different perspective now. We all read in the paper, we all read on the TV. बहुत सारा ब्लैक मार्केटिंग हुआ, बहुत सारा मिसयूज हुआ, ड्रग्स का भी, मशीन्स का भी, ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ दिल्ली में. What one piece of advice you guys as Medicart, Manoj, Saurabh, I mean, I believe you have any self interest, you have helped people. What one piece of advice you would give it to such people? And I know for sure there were medical practitioners who were involved in this. So, any piece of advice, guys, to the medical colleagues fraternity? Yeah, I tell you, when we entered into this business, frankly speaking, I had a quote on my rear side of my table, mentioning that to think thrice before hurting my company, because this company is like my mother. So yes, when I Saurabh joined, तो हम लोगों ने एक रूल बनाया है इसके अंदर. See, why I'm personalizing it, because everything starts from there. So मैंने सौरभ से बात की तो सौरभ हमारा जो सिंक है उसका एक और रीजन यही है कि हमारे कुछ कोर थॉट्स बहुत मैच करते हैं. तो हमने बोला कि यार ये जो काम है ना, ये एक तो हमें जैसे चाइल्डहुड में हमें वो घनश्याम दास बिरला का वो जो लेटर उन्होंने अपने बेटे को लिखा था वो हमें बहुत इन्फ्लुएंस किया था. ठीक है, तो वो सौरभ के साथ भी था, वो मेरे साथ भी था, तो इट कैन नॉट बी ए कोइंसिडेंस. तो इस चीज को देखते हुए हमने बोला था कि वी विल प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें क्वालिटी विद अफोर्डेबिलिटी लाके देनी है अपने इंडिया में. तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव था. अगर कोई प्राइस किसी एक्स चीज का प्राइस कोई एक्स बंदे को एक्स ही मिल रहा है और हमें भी एक्स मिल रहा है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाती है कि उसको हम अफोर्डेबल करें. कुछ फाइनेंशियल टूल्स होते हैं, जैसे हम उसको रेंटल में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर हमारे पास कुछ फाइनेंशियल टूल्स होते हैं. तो मैक्सिमम क्या होता है कि जब हम इस इंडस्ट्री में आए तो हमारे ही डिवाइसेस जो थे तो यूएस से इंपोर्ट होते थे, वो उनके ऊपर 35 से 40% का मार्कअप होता था. ये सारे इंपोर्ट होते थे. एंड जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि why do we need 35%? If I need 35 rupees out of 100, instead of earning 35 rupees on one device, I will sell 4 devices and I'll earn 35 rupees. Because with this, I will cater 4 patients with that same much of money. So this is the reason that we grown in volumes by 4 times, but in customers we grown by 10 times.
So this is a theory of our this thing. Trust me, I can only explain in my words because the financials can be tweaked. Financials cannot be understood by everyone, but we never worked more than 10%. We never worked more than 10%. And we never worked with those medical practitioners, those who used to, take their referral fees and all. It's a social media, so I should not say that, but we never worked there. So this is a policy of Medicard. Since we were living with this policy, when this crisis came, we did not face much of a problem, frankly speaking. When there was an MRP in the product, and we were sure that we could easily sell at MRP when the MRP is listed there. We always tried to give discounts on MRP. मैं अगर आप डिस्काउंट ही दे पा रहे हैं MRP पे, तो आप अपने पर्पस से डेविएट कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं आता. अब पीस ऑफ एडवाइस की जब बात आप करते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग है, बिकॉज पीपल दोज हु हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस may be struggling because this is a war between fear and greed and fear actually. So किसी को डर है कि मेरा बिजनेस ना खत्म हो जाए, किसी का डर है ये कि मेरे अपने ना चले जाए, तो ये तो डर है. और ग्रीड का तो सर कोई अंत ही नहीं है, ठीक है. तो ये तो आपकी जीन्स में होना चाहिए, ये आपकी वैल्यूज में होना चाहिए. इसमें इंडिया, यूएस, कंट्री, इसमें कुछ नहीं होता है, ये फैमिलीज होती हैं. I will take 1 minute of yours if you allow me. I was going through a professional depression in 2001 and 2002. So I read one book called You Can Win. I mean, Dr. Shiv Khera. Everybody knows about it. Most of the people have read it. So उसमें एक कोट था कि आप कैसे टेस्ट करेंगे कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. तो उसमें एक जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था, वो आज तक मेरे ब्रेन में है. मैं अपनी टीम के साथ भी बहुत बार डिस्कस करता हूँ. उसमें उन्होंने बोला था कि इसके 2 टेस्ट हैं. वो पहला टेस्ट ये है कि बाबास टेस्ट. बाबास टेस्ट मीन्स जो भी आप डीड कर रहे हैं, बाबास टेस्ट, BA टेस्ट, बाबा, ठीक है. बाबा टेस्ट मीन्स कि जो भी आप कर रहे हैं, क्या वो आप गुमान से अपने बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा मैंने ये किया अपनी लाइफ में. तो दैट इज वन टेस्ट. अगर आप उसको बता सकते हैं तो आप जो कर रहे हैं वो ठीक है. अगर आप उसको नहीं बता सकते तो वो गलत है. एंड देन ही सेड कि इफ दिस फॉर्मूला डजंट वर्क फॉर यू, देन देयर इज अनदर टेस्ट. द अदर टेस्ट इज मम्मास टेस्ट. The mama's test means that अगर आप कोई चीज करते हैं तो अपनी माँ को बता सकते हैं वो. अगर आप उस माँ को गुमान से नहीं बता सकते हैं, then it means that is wrong. एंड अगर बता सकते हैं तो वो ठीक है. तो अपने राइट और रॉन्ग को डिसाइड करना आपके हाथ में है. अगर आप प्राइड से अपनी मॉम को नहीं बता सकते, प्राइड से अपने बच्चों को नहीं बता सकते, तो वो गलत और सही आपका खुद डिसाइड हो जाए. अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को कोई चीज 10,000 रुपए की मिली और मैं उसको 11,000 का बेच रहा हूँ, तो वो 1,000 रुपया तो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे उन एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, उनके घर चलाने हैं, मुझे उन ऑफिस का रेंट देना है जिसमें मुझे डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बनाया हुआ है, मुझे उस डिजिटल की पेमेंट्स देनी है. बट अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2,000 रुपए अर्न करने हैं, तो हो सकता है कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है उसको, तो मैं उससे 2,000 रुपए ले लूँ. बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप यूनानिमस उसका 12,000 रुपए का प्राइस कर दे, सिर्फ डिमांड और सप्लाई का. ये सब आपके हाथ में है. इसमें गवर्नमेंट्स का भी बहुत ज्यादा हाथ नहीं है, ये आपकी पर्सनल कंसाइंस है और कुछ नहीं. मैं आपका सादा समय ले गया, आई अंडरस्टैंड दैट, बट दिस इज द ओनली आंसर. I really appreciate the way you think. You're always bringing a new perspective to the whole discussion. That's commendable. I mean, Saurabh, your views. Yeah, just adding to, I think he has covered most of the things. I can just say about at this time also, from last 1.5 months, 2 months, there is a lot of scarcity of devices. We were not able to, availability was a problem, yes. But as of now, I can proudly say from last 1.5 months, it's not about Delhi, it's not about North India. I'm saying in pan country, in whole of India, our prices have been lowest in terms of the oxygen machines, right? And we can proudly say this thing, anybody can check it, right? So the point was, you were saying that the point of what is the advice? See, for the patient, they have to look for a respectable brand, right? Because it's not something like TV fridge की हमने थोड़ा सा experiment कर लिया और हमने TV ले लिया, अच्छा नहीं है, fridge ले लिया, अच्छा नहीं है, right? तो आपको एक अच्छे brand के साथ जाना पड़ेगा, आपको एक अच्छे seller के साथ जाना पड़ेगा. Because see, if somebody is purchasing a device, it's a marriage for 3 to 4 years. वो उसको 3-4 साल तक कभी यूज करेगा, प्रॉब्लम आएगी, तो उसका पार्टनर अच्छा होना चाहिए जिससे वो आपको आफ्टर सेल सर्विस दे सके, आपकी बात सुन सके, आपको सॉल्यूशंस दे सके, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. तो अगर रखना है, इफ somebody is having some respiratory patient at their home, yes, they should be having it. और सेकंड पॉइंट है, अगर किसी को लगता है कि शायद मे बी फ्यूचर में मेरे को जरूरत पड़े या फिर मैं किसी की हेल्प भी करना चाह रहा हूँ,
then they can have it, right? Otherwise, the oxygen concentrator banks बना दिए Delhi government ने, the hospitals are also having it, so it's not mandatory to have it. But अगर एक दो family मिलके एक unit रख लेती है, that will help. So this is something which I would like to say कि this will help, क्योंकि respiratory patients के लिए बहुत helpful रहता है. और अगर मेरे को है कि यार मेरे घर में problem नहीं है, पड़ोसी का problem है, तब भी मैं help कर दूंगा, that will help. So then it can be done. Otherwise necessity नहीं है as of now. नहीं, बट एक चीज बताइए कि अगर मान लीजिए हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में कहीं ना कहीं एक डेस्परेट बाइंग वाला एक ट्रेंड देखा हम लोगों ने, जिनको शायद जरूरत नहीं भी थी फिर भी और पैसा था तो उन्होंने प्रोक्योर किया, प्रोक्योर करके रख लिया, इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने सोचा चलो बैकअप है. और उस डेस्परेट बाइंग के दौरान भी सॉ लॉट ऑफ चाइनीज प्लेयर कमिंग इन. हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की अगर मैं बात करूं, वो आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, but I have seen price going multi-folds. So in that eventuality, and somebody was telling me the other day that oxygen concentrator can only take care of certain level of SpO2. अगर आपका 92 या 90 से नीचे है, correct me if I'm wrong, you are the best people. So कितना important है to maintain that? Yeah, technically I can reply. Was it right? Yeah, technically I can explain you, but the best judge is the doctor. But what we faced and what we have learned out of these trainings and workshops, one is that if our SpO2 ideally has to be 100%, but if I'm speaking to even my SpO2 currently would not be 100%, and depending on the comorbidities and the breathing pattern which you have, many of us are anxious in nature, so breathing pattern varies. So probably it is ideally 95 to 100%. A healthy SpO2 presumed is 97% plus, and borderline is 95 to 97%. There are two things. One is oxygen. The other one is the flow of oxygen at the time of urgency. So this is what a patient or a sufferer has to understand. A concentrator, which whatever we are selling, as for example, if Philips is selling, it is having a 5 psi flow rate. So there is a flow of oxygen which comes out. So it can be managed from 85 to 92. It can be managed at home with that flow. Even the liter per minute, which is called 5 LPM oxygen जो dosage है, वो भी अगर आप कम देते हैं पर flow ज़्यादा होता है तो patient को effect ज़्यादा होता है, उसको help ज़्यादा मिलती है. The moment it goes crashes to a level of 70, 60 because of n number of reasons. I mean, I'm not discussing reasons here. अगर वो 70 पे चला गया, oxygen concentrator at that 5 LPM may not help. This is only 2 or 3 patients I heard that helped them. And overnight अगर कोई challenge आ गया तो वहाँ उनको support मिल सकता है. That is why people keep it. But you cannot get the 100% help. So what will help exactly? Exactly is you should have a high flow oxygen. And that high flow oxygen can either be given in the hospital or can be managed at home with the help of a cylinder. Cylinder has a pack high flow because उसमें उसका जो flow rate होता है, flow meter होता है, वो help करता है. Coincidentally, unfortunately, वो flow meter भी short हो गए थे market में because nobody predicted that. This was unprecedented movement in events, so everything was in a chaos that time. So that is why people said कुछ मिल जाए, सांस आ जाए. But the panic thing was, even in my family, I am keeping one concentrator. I was corona positive, but I did not use it because we had a mild symptoms. But I am only keeping one unit. For me, my brother-in-law living nearby, my friends who are nearby, and we have only 5 concentrators in the whole society, and we managed with that. See, the data is 85% of the patients recovers with the mild symptoms as of now. 15 to 16 or maybe 20% faces the challenges. So if you have your family members around 20 people, probably the rate of requirement is 2 to 3 people. Why do you need 20 concentrator, right? So that was the panic. So that calculation, somebody has to guide them. We have a typical example when somebody called me and said that, boss, I need a ventilator. That guy was rich. He can afford it. And ventilator costs minimum 5 lakh rupees. Then he said, Mega, why do you need a ventilator? Is somebody ill at your family? So I need a ventilator because there is a chaos in the market. There is no hospital beds. So I need a ventilator at home. So Mega, but you can't manage a ventilator at home.
कहता मेरे पास डॉक्टर है वैली में, वो मैनेज कर लेंगे। मैं कहा ओके सर, देन यू नीड टू गिव मी अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। ही मैनेज द प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो, he managed the prescription also from known doctors, family doctors, whatever you call it. Then I suggested him, for fine sir, I have met my compliance, I can sell you the ventilator, but practically you should not buy it. As a person who's carrying a lot of inventory, I had suggested him don't to buy it, because this is a last stage of this thing. And believe me or not, in many of the hospitals, people can't run how to know how they don't know how to use ventilators. There are various modes. We need bloody 2 hours training every day, and then after 30 days, we learn that this is how we have to use the ventilator. How can they use the ventilator so easily? It's not that easy job. So somehow that thing went into his mind, and he said, then what should I do? Something I have to do. That was the panic. That's a fear factor. मैंने कहा आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप एक कॉन्सेंट्रेटर रख लीजिए, यही फर्स्ट 10 डेज में आपको चैलेंज देगा, तो वो आप रख लीजिए। कहते व्हाट डज इट कॉस्ट? मैं 50-60,000 रुपीज। कहते ये तो मेरे को बहुत सेव हो गया। तो मैंने उसका 3.5 लाख रुपया उसको सेव करवा दिया। he called me 10 days back when the things toned down. He called me 10 days back and said that my mother is running an NGO, I need 10 ventilators there. तो मैंने कहा आप ले लीजिए। कहता सर मैं आप ही से लूंगा वेंटिलेटर्स, बिकॉज यू सेव माई लाइफ एंड मनी। So that is the guidance, you can't just always try to do business. That is what healthcare business is all about. It's not about just, selling goods like TV, fridge or something like that. I'm carrying inventory to cater the patient, healthcare practitioners, to the person who actually needs it. I have to meet my compliance also. So, I could answer your question in a very detailed manner, but this is the fact. Everybody do not need oxygen concentrator. Everybody did not require steroids. And सारा जो mess हुआ है पैनिक की वजह से हुआ। कोई डॉक्टर अप्रोचेबल नहीं था उस वक्त पैनिक में, कुछ लोगों ने स्टेरॉइड एक्स्ट्रा ले लिए तो उनको ब्लड थिक हो गया, तो उसमें कैजुअलिटीज बढ़ गई। तो डेथ रेट के काफी रीजंस है उसमें, ये सिर्फ ये रीजन नहीं है कि पैंडेमिक किल्ड पीपल, इट इज लॉट ऑफ रीजंस। I cracked a joke in front of my society group. I said that we used to discuss the scarcity of doctors, medical practitioner, few years back. अभी तो वो खत्म हो गया। तो वो कहते हैं कैसे खत्म हो गया? मैं कहता हूँ everybody is a doctor. Every home has a doctor. They go to the Google and they prescribe things. Steroid prescribe हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो मैं कहता हूँ everybody is a doctor. Nobody needs a prescription to bloody get a blood sample and all. If you ask me, आप ये ले लीजिए, आप वो वाला मेडिसिन ले लीजिए। So this is a joke, but this is a reality. Sorry. So, I think, just adding to what Manoj sir has said, that, you have to find the right source. अगर आप उसको आपको पता है, then you don't need to panic. In fact, I realize कि अगर आप सही एडवाइस देते हैं तो आपकी गुडविल बनती है मार्केट में, and people remembers you and then they trust you also, right? So it just ethically अगर काम करेंगे तो मेरे को लगता है कि लॉन्ग रन में तो it will be helping you a lot. In fact, helped us a lot. हमारा ग्रोथ जो है 40-50% हर साल रहा है, some years it has been 100%. But that अगर ethical working रहती है, and the best part is even our team understand this. It's not like you're talking to Manoj ji, Saurabh, तो वो ये बता रहे हैं. Even you'll talk to somebody who is down the line, they will also suggest the same thing. हमारे पास इतने सारे फोन्स आते हैं, we tell them कि आपको पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत नहीं है, that is worth 1.75 lakhs, आपको इससे काम चल जाएगा 50-60 हजार वाले से. So if you give the right advice, then it helps you a lot. आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करता है. And I can just say that our customers are our brand ambassadors, because हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं करते हैं, बट वो कस्टमर के थ्रू, क्योंकि इट्स अ निश मार्केट, रेस्पिरेटरी एंड स्लीप का मार्केट निश मार्केट है. बट इफ यू हैव गुड सर्विसेज, आप अच्छा करते हो, तो कस्टमर्स एक्ट एज ए ब्रांड एम्बेसडर एंड यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर फॉर दिस थिंग. सो ये है. बाकी जैसे बोला कि यस, ब्लैक मार्केटिंग हुई और काफी सारी चीजें हुई, बिकॉज पीपल वर नॉट अवेयर, पैनिक में ये चीजें हुई. बट आई थिंक पीपल शुड बी अवेयर कि व्हाट इज द राइट थिंग दैट हैज टू बी डन, एंड पीपल शुड ट्राई टू हेल्प ईच अदर. वो हेल्प करते तो बड़ी हेल्प होती है. मैंने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने अपने फ्रेंड को दिया, उसने उसके ठीक हो गया, उसने अपने किसी और दूसरे को भी दे दिया, फिर वहां से फिर वापस आ गया. मेरे घर से पोर्टर के थ्रू ऑलमोस्ट 17 मशीन गई है, जबकि मशीन एक ही रखी हुई थी. वो गई, किसी और क्या गई, वो आप क्या गई, आपने मेरे घर भेज दी, मेरे को फिर से फोन आया, मैंने किसी और को भेज दी. सो दिस वे इट्स नॉट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो अगर कोरोना भी तो 14 डेज के लिए है ना, 14 डेज के बाद तो दैट कंसंट्रेटर इज फ्री. सो विद इन 1.5 month आप पता नहीं कितने लोगों को हेल्प कर सकते हो. Exactly. Very interesting. Yeah. Absolutely.
So that can be a benchmark, and that can be a learning for lot of people actually. After 14 days cycle, the same machine can be used by many. So looking at the demand, do you guys see this getting ended in 2021? See, frankly speaking, the world, I should not use the word this will end. This will be a part of life. This virus thing, it's very difficult to predict that this will end. But the demand will tone down. As we are speaking in social media, we'll speak in common forums, and it'll obviously say कि आपको 15 से 20 दिन के लिए चाहिए, तो सारे पेशेंट अगर इकट्ठे हो गए हैं तो आप किसी तरीके से कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं. जैसे हमारी अपनी सोसाइटी में ही 190 केसेस थे हमारे पास, और टोटल रेजिडेंट्स जो फ्लैट्स हैं वो 625 हैं. तो अगर हर घर के अंदर 2 या 3 बंदे भी होंगे तो 1200-1300 से 200 थे. वो 200 को हम लोगों ने मैनेज किया है 3 सिलेंडर से. और क्रिटिकलिटीज को अगर मैं हटा दूं, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन भी हुई हैं, उनको अगर मैं हटा दूं तो 3 सिलेंडर थे हमारी सोसाइटी में, हमारे क्लब के अंदर. और मेरे ख्याल से 3 चाइनीज इंतजाम किए थे वो कॉन्सेंट्रेटर, 3 हम लोगों ने भेजे थे अपने ऑफिस से यहाँ पे. तो 5 या 6 हम लोगों से कॉन्सेंट्रेटर में इंतजाम हुआ, तो वो भी नेबरिंग सोसाइटीज को भी हम लोगों ने शेयर किए थे. तो 7 डिवाइसेस थे जिससे हम लोगों ने मैनेज कर लिया था 190 केसेस को. एंड दिट्स अ प्रैक्टिकल डाटा. इट्स अ प्रैक्टिकल डाटा. तो इतनी डिमांड तो होगी, वो टोन डाउन हो जाएगी. आगे हो सकता है इसमें, मतलब ये पूरा सिनेरियो जो आप बता रहे हो, इससे कुछ आगे आने वाले टाइम में आपके बिजनेस प्लान में भी चेंज हो सकता है. कल को मेडिकार्ड जो है ना इक्विपमेंट्स रेंट पे देना शुरू कर दे कि भैया 14 दिन के लिए आप रेंट पे. वो हम लोगों ने किया है. मैं आपको बताता हूँ, वी हैव अ रेंटल मॉडल आल्सो. इट्स अ कमर्शियल मॉडल वी हैव. बट हम लोगों ने जब पैंडेमिक 2020 में आया था, वी हैड 40 to 45 स्पेयर यूनिट्स. व्हाट डिड वी डू विद दोज यूनिट्स? वी डिसाइडेड कि हम रेंटल नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा पेशेंट, हम होम केयर में जाएंगे तो वो लोगों को वहम हो गया था कि हमारे कोरोना के पेशेंट को मशीन कैसे यूज करेंगे. तो हम लोगों ने एक सिंपल थ्योरी करी. हमने 15 यूनिट मेरी RWA में हम लोगों ने प्लेज कर दी. कुछ सौरभ ने अपने किसी चैरिटी इंस्टीट्यूट में प्लेज कर दी. 40 की 40 यूनिट हमने प्लेज कर दी विदाउट एनी कॉस्ट. तो इट वॉज अ CSR एक्टिविटी फॉर अस. समहाउ दैट वर्कड फॉर अस. हाउ? बिकॉज उनको ये रियलाइज किया कि मशीन्स का हम लोगों ने जो डिमांड था ना, वो टोन डाउन कर दिया. अभी भी जो आप डिमांड देख रहे हो, पीपल दोज हु कैन अफोर्ड, ओनली देन दे आर गिविंग अस इंक्वायरीज कि जो 50 से 60 हजार रुपए स्पेंड कर सकते हैं वही दे रहे हैं. अभी मैं आपको एक टिपिकल केस बताता हूँ. मैंने जब उनको बोला कि सर मेरे को, कहते हैं बहुत अर्जेंसी है, मेरे को 1 यूनिट करवा दीजिए. मैंने कहा सर आपको बहुत अर्जेंसी है तो हमारे पास एक बैकअप यूनिट है, हम आपके घर भिजवा देते हैं, आप पेशेंट का ध्यान रखिए, जैसे 10-15 दिन में यूनिट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे. नहीं सर, वो कहता है मुझे नहीं सर, मुझे बैकअप यूनिट नहीं चाहिए. That तो I have. Gangaram Hospital has given me that backup unit. I need the new unit for myself. इसका कोई इलाज नहीं है. If people want to keep a luxury कि मेरा अपना यूनिट होना चाहिए, मेरा अपना हॉस्पिटल होना चाहिए, मेरा अपना बेड होना चाहिए, तो उसके लिए तो आपके पास, हमारे पास ज्यादा रास्ते नहीं है. उस डिमांड को तो हम भी कम नहीं कर सकते. And that we would also welcome that as a business class. राइट. सो अगर आप लेना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, मैंने तभी आपको बताया ना, अगर आपको ये अफोर्ड कर सकते हैं तो हम 10 रुपए के 12 रुपए भी अर्न करने को तैयार है. बट अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो हमें 10 रुपए से ज्यादा नहीं चाहिए. So we are okay with the 10%. And अगर आप BPL है, मतलब below poverty line है, we are okay to pledge the units to you. So it is a mix of many things in healthcare. You have to be conscious there. Manoj, you are doing a wonderful job. Yeah, please, Saurabh. So just adding to what Manoj sir said, that the point is, अगर इंडिविजुअल की बजाय अगर सोसाइटीज इसे रखें, दैट मेक्स मोर सेंस, बिकॉज देन द पेनिट्रेशन विल बी मोर, राइट. जो सोसाइटीज, द RWAs ये अपने पास रखेंगी तो ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाएंगी, rather than one person is keeping it with themselves. जैसे मनोज सर ने एग्जांपल दिया, एक सोसाइटी में अगर आपने 5-10 यूनिट्स रखनी, मेक सेंस. you don't need to go for 1000 units, right? 1000 units, 10 अगर आप रख लेंगे, so now it is, so as a individual, I need to go to my society and I need to talk to them, RWA, कि भैया आप 5 रखो, 3-4 रखो, क्योंकि आपसे ये सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा जो है, राइट. बट हैविंग सेड दिस थिंग, इसमें भी हमारे को ध्यान रखना है कि आपने मशीन तो दे दी, बट उसके जो एक्सेसरीज हैं, दोज हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. आपको जो उसका कैनुला है, नेजल और वो ह्यूमिडिफायर बॉटल, दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड. समबडी हैज यूज्ड इट एज अ कोरोना पॉजिटिव, और दूसरे पे यूज करेंगे तो वो फिर हम लोग इन्फेक्शन को फैला रहे हैं. तो दिस अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट. दे शुड बी अवेयर कि यार मेरे पास ये 5 या 10 ये कैनुला होने चाहिए, ये 10 बॉटल होने चाहिए. एवरी पेशेंट हैज टू बी गिवन अ डिफरेंट सेट ऑफ कैनुला एंड दिस थिंग. एंड वील से अप टू दिस लेवल ऑल्सो कि आप उसका फिल्टर भी चेंज कर लीजिए, राइट. एक बंदे ने 15 दिन यूज कर लिया, आप उसका ये फिल्टर, कैनुला एंड ये जो आपका ह्यूमिडिफायर बॉटल है आप चेंज कर लीजिए. सो वो उसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 2-3 हजार रुपए में काम हो जाएगा.
right? So we have to be very careful. That's one thing, you know, जैसे मनोज सर ने बोला कि it has to be done with a proper person who's guiding the how it has to be done. You know, हम लोग रखने के बाद उसे यूज ही नहीं कर पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है. We gave it to one hospital last year, जुलाई में अर्जेंसी में मांगा था, हम लोगों ने दिया. These guys called me up, you know, 15 days back. उन्होंने बोला कि वो सौरभ वो ना एक उसमें कॉर्ड नहीं आई थी. मैंने कहा सर 1 साल के बाद आप फोन कर रहे हो? वो कहते हैं ओपन ही अभी करे थे ना. Many cases like that. अभी ओपन ही अपने आप कर रहे हैं ना. तो I think, you know, institutions should come forward, corporates should come forward. मेरी कंपनी में दो यूनिट रखी होनी चाहिए, हर एक कंपनी में 2-4 यूनिट रखी होनी चाहिए, which will help a lot of people. So I think, you know, this is the right way of doing the things. Calibrating the demand, right way to हमारा हो calibrate. जाएगा, हमारा तो हो जाएगा, हम कॉर्पोरेट्स में कर लेंगे तब भी हो जाएगा. बट वी डोंट वांट दैट, नो एनीबडी जिसको नहीं भी जरूरत है वो बेचारा वो इतना 50,000 प्लस में रख रहा है, 60,000 में रख रहा है. दैट इज नॉट ए राइट वे. आई वुड नॉट लाइक कि मेरे घर में भी कोई चीज रखी है 3 साल से एंड आई एम नॉट यूजिंग इट आल्सो. So this is our thought processes. I mean, it was really good to hear, very inspiring, and you guys are doing wonderful job. मनोज, एक आखिरी सवाल आपसे, इससे पहले कि हम लोग एक दूसरे को अलविदा कहें और दोबारा कनेक्ट होने का वादा करें. What is your one piece of advice to the young entrepreneur जो आपकी फील्ड में आना चाहे और maybe they may become your competitors tomorrow, but what is that one piece of advice to them? Yeah, precisely I would put 2 or 3 points here. One is that the person should be compassionate about this business. There is money, but you have to calibrate. So if I give you a piece of advice at a, you know, एक छोटा आदमी होते हुए मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा इसमें. If you're 100% coming to create a hell of a wealth, don't come into this business. Don't come into this business. Be rational, because आपको यहाँ पे सर्व करने के लिए आना है. I used to quote, there are various countries, I don't want to quote here in the system, but there are various countries, those who have capped the salaries of medical practitioners and giving them all the facilities, like military men, defense people, they're giving all the, but they have capped the salaries of it. So this is a noble profession. Right. Teaching, healthcare, it's a noble profession. If you want to run your bread and butter and live a respectable life, come here. But if you just have a focus of earning money, don't come into this business. See, this business, you ask me, it is 70% is a commercial, 30% is CSR mandatorily. But it's up to you whether you want to make it 50-50. It's up to you. There are people, those who are doing 100% CSR. It's up to you. I also wanted to understand, you know, for these young entrepreneurs, how much family compromise because of this passion. Yeah, they should be mentally prepared. I'm sure they are compromising, you know, on your time, on your they should be mentally prepared while developing the healthcare. I mean, that is required for every entrepreneur. But I remember when my friends were coming in and going out in the system, my friends were staying at my home, and you know, my wife was cooking food for them, managing all the meetings for them. Meeting की हमारी preparations होती थी, तो वो हमारी help करती थी. I remember the first training which I had, my wife went with me in the Philips office, and we did the training together because I did not have any company, because I was started my company with a driver. तो मैंने बोला कि आप मेरे साथ चल पड़ो, because to also understand. And उन्होंने मुझे पहले 6 महीने 7 महीने सपोर्ट भी किया उस चीज के लिए. तो फैमिली का सपोर्ट हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव में इसलिए चाहिए. अगर सौरभ संडे को काम कर रहे हैं तो वो उनको पता है कि वो सौरभ अपने काम को, हेल्थ केयर सेक्टर है ये तो अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं. इन हेल्थ केयर देयर इज नो हॉलीडे. There is no holiday. If there is a holiday, there has to be a synonym of holiday in healthcare is a bliss, which has to be there in your mind. कि वो bliss है, आज मेरे पास bliss करना है तो आज आनंद है, मैं करूंगा, आज enjoy करूंगा अपने जीवन को. तो वो है. I remember we had an outing for 7 hours on 3rd of April. 3rd of April, while doing कि हम कहीं बहुत ज्यादा आ जा नहीं सकते, तो we went to a farmhouse with our team in this 3rd of April. And so 31st को हमने क्लोजिंग किया, तो हमने कहा इस बार आउटिंग में हम एक दिन का लंच करवा लाते हैं लोगों को. तो हम गुड़गांव जाके वापस आए, और बिलीव कीजिए हम लोग आए थे, अगले दिन से फोन कॉल्स आ गए और पैंडेमिक पिक कर गया. तो बस यही ब्लिस था हमारे लिए. तो ये मैं अपनी फैमिली को भी, उनको भी ये एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते तो हेल्थ केयर में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, बिकॉज इट नीड्स टाइम and acute level of time. Believe me and Saurabh was suffering, I mean, managing all their family members, because his father, his mother, his wife was corona positive, and he was working. Believe me, he catered to 250 customers.
ही कुड हैव इजीली सेड कि मैं कैसे करूं, मैं उनका ख्याल रखूं या करूं, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे अपने किसी को खाना दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। आई वाज सफरिंग थ्रू अ कोविड पॉजिटिव एंड आई डिड नॉट स्विच ऑफ माय फोन। मैं बात करता रहा, मुझे लगा कि आई थिंक मेरा शायद वो बीत भी इसी वजह से गया, बिकॉज वी वर वेरी बिजी देयर, हमारा लैपटॉप ही नहीं बंद हुआ उसमें। तो ये तो आपको सैक्रिफाइस मेंटली करना पड़ेगा अगर इस धंधे में आना चाहते हैं तो। ये बहुत हैट्स ऑफ टू यू। आई मीन आप लोग उस फ्रंट पे मुस्तैद हैं, तो बाकी हम लोग थोड़ा सेफ हैं, बिकॉज यू आर ट्रू कोरोना वॉरियर्स, आई मस्ट से। You know, people are recognizing knowledge in doctors, but companies like you are truly contributing the whole cause. I'm really glad that we had this session. And Manoj, thank you so much. बट एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि उस समय के दौरान जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो आवर फैमिली ऑल्सो सेड कि आप जब बीमार हैं तो आप कैसे कर पाओगे। तो हमने कहा कि ये तो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मतलब वी वर गोइंग इनटू अ डिप्रेशन, लिटरली डिप्रेशन। अगर हम ना करते तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक होता है। तो ये एक ऐसा इन्फ्लक्स वैक्यूम पीरियड था जो हमें लगा कि ये 30 दिन 30 साल के बराबर थे, बट इट वर्कड फॉर अस, वर्कड फॉर द सोसाइटी आल्सो। And Vaibhav, you're mentioning this, so it's not because of us. You know, we might have just analyzed it, but just it is because of the great team that we have, that they were available, right, in spite of